Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 9 and the name of our chapter is Space and Satellite. Today we are going to study about NASA. सो नासा एक इंस्टीट्यूट है जिसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कुछ स्पेस इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि स्पेस के बारे में फर्दर डिस्कवरीज कर रहे हैं, इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं. सो नासा इज वन ऑफ देम. इसकी बड़ी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं. क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं हम आज इन डिटेल जो है वो डिस्कस करने वाले हैं. So my dear students, before that let's quickly recap what we did in the previous lecture. For that you have to listen to the questions very carefully and then answer them. So quickly tell me that what is space? Space is a boundless three-dimensional region where there is no air and light, and it has also no gravity. It is a vacuum. So how and what did scientists explore it by study of space? So scientists explored that about the weather, about the solar system, about the phases of the moon, about day and night, about the weather. So all these things were discovered after the exploration of the space. Okay, my dear students, now is the time for an activity. So for which what you need to do is, here you have to look at the pictures. This is a picture of the moon. यानी कि जिस शख्स ने पहली दफ़ा जो है वो चांद पर कदम रखा था तो उसके बाद उसने वहाँ पर पिक्चर ली. तो स्पेस में गए, स्पेस में जाके मून के ऊपर जो है लैंड किया और उसके बाद जो है मून की सरफेस को देखा और देखा कि वहाँ पर किस किस्म का जो है वो एनवायरनमेंट कैसा है वहाँ पर, क्या वहाँ पर हवा है, क्या वहाँ पर ग्रेविटी है. इन तमाम चीज़ों के बारे में जो है वो साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो स्टडी कर रहे हैं. इसके अलावा दिस इज़ वॉक ऑन मून. Then this is a picture from the telescope, हबल टेलीस्कोप. ये उसका इमेज है और ये एक गैलेक्सी का इमेज है. यानी कि उन्होंने ये इमेज लिया हुआ है कि हमारी गैलेक्सी जो है वो किस तरह की दिखती है. सो दिस इज अ इमेज ऑफ हबल टेलीस्कोप और इस तरह के बहुत से जो इमेजेस हैं वो इस टेलीस्कोप की मदद से लिए जाते हैं. ओके, द मैजेस्टिक. सो नासा वॉज द फर्स्ट टू पुट ह्यूमंस ऑन द मून. यानी कि नासा जो है ये पहला इंस्टीट्यूट था जिसने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा और उन्होंने चांद के ऊपर कदम रखा. इसके अलावा द मैजेस्टिक स्पाइरल गैलेक्सी वाज इमेज्ड बाय द हबल स्पेस टेलीस्कोप नासा. सो नासा के पास एक टेलीस्कोप है विच इज नेम्ड एज हबल टेलीस्कोप, जिसका मैं आपको बता चुकी हूँ. और ये जो स्पाइरल गैलेक्सी है हमारी, इसके इमेजेस जो हैं और बड़े अच्छे इमेजेस जो हैं स्पेस के, वो हमें इस टेलीस्कोप की मदद से नासा जो है वो दिखाता है. Okay, so in today's lecture, the students will be able to recognize the role of NASA, that is National Aeronautics and Space Administration in space exploration. So my dear students, NASA जो कि एक space institute है, इसका क्या जो है contribution है towards the exploration of space. Today we are going to discuss that. So my dear students, pre-reading question. So quickly tell me that what are different institutes that are working in study of space. So other than NASA, what are the different space? That is PACO, Pakistan Space Agency is also working for the space exploration. और इस इन एजेंसीज के थ्रू, इन इंस्टीट्यूट्स के थ्रू जो है वो स्पेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम डिस्कवर कर रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं. Okay, my dear students, now is the time for reading, for which you need to open page number 116 in your Science 5 books. I hope everybody has opened the page. Now let's start the reading. NASA, National Aeronautics and Space Administration. It is an American government agency that works in space for science and technology. NASA is amongst the most well-known and resourced institutes to research space. So my dear students, ये एक American institute है, उनकी गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है ये, और it stands for National Aeronautics and Space Administration. N for National, A for Aeronautics, S for Space and A for Administration. So National Aeronautics and Space Administration. So it is an American Government Institute और ये जो है स्पेस के बारे में, साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में जो है वो रिसर्च करते हैं और नई डिस्कवरीज करते हैं. So NASA started its work on October 1st, 1958. This agency was created to explore the space and to do research in it. This agency sends astronauts in space to conduct scientific research to learn more about the Earth.
Some of the contributions of NASA are given below. So my dear students, basically इस इंस्टीट्यूट का क्या काम है कि ये एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजते हैं, इससे ये अर्थ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करते हैं, इसके अलावा स्पेस के बारे में स्टडी करते हैं, स्पेस को एक्सप्लोर करते हैं और जो नई डिस्कवरीज हैं वो हमारे सामने आती जाती हैं, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा जो है वो मदद मिलती है डेली लाइफ में. सो कौन कौन सी नासा की कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस, लेट्स डिस्कस दैट. So NASA achievements. NASA launched a space shuttle program 1972 to 2011. In this program, more than 300 astronauts sent into the space for research. So my dear students, 1972 से लेके 2011 तक एक प्रोग्राम था नासा का, जिसमें उन्होंने 300 एस्ट्रोनॉट्स को, बल्कि 300 से भी ज़्यादा एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा ताकि वो स्पेस के ऊपर जो है वो रिसर्च कर सकें. NASA for the first time in the history sent humans into the space on 20th July 1969. यानी कि 1969 में सबसे पहले नासा ने इंसानों को स्पेस पे भेजा. NASA launched missions to study other planets such as Cassini's mission was launched to study Saturn in 1997 to 2017. So 1997 से लेके 2017 तक एक मिशन नासा ने लॉन्च किया था. दैट वाज नोन एज कैसिनीज मिशन. और इस मिशन में उन्होंने कौन से प्लैनेट को, सैटर्न को जो है वो स्टडी किया और इसको एक्सप्लोर किया. Then Juno mission was aimed for Jupiter. The New Horizons probes were sent to study dwarf planets. इसके अलावा New Horizon probes जो है उनको सेंड किया था ताकि वो जो dwarf planets हैं उनको स्टडी करें. One of the major contributions of NASA is the Hubble telescope that sent amazing pictures of space and heavenly bodies. इसके अलावा नासा की एक बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन है जिसमें वो हबल टेलीस्कोप जो है उससे बहुत सारे स्पेस के इमेजेस जो हैं और हेवनली बॉडीज के इमेजेस, गैलेक्सीज के इमेजेस जो हैं वो सेंड करते हैं. Beside these achievements that proved milestones in space study, NASA sent many satellites, spacecrafts, probes, shuttles, etc. for different research purposes. इसके अलावा यानी कि नासा ने बहुत सारे माइलस्टोन्स अचीव किए हैं स्पेस डिस्कवरी के अंदर और इसकी एक्सप्लोरेशन के एक्सप्लोर करने में इसको. लेकिन इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी सैटेलाइट्स, प्रोब्स और शटल्स को, स्पेस क्राफ्ट्स को स्पेस पे भेजा है ताकि वो स्पेस के ऊपर मजीद जो है वो रिसर्च कर सके और वहाँ बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो परफॉर्म कर सकें. So this is the logo for NASA. NASA stands for National Aeronautics and Space Administration. NASA is also helping teachers and students in making scientists, engineers, astronauts and professionals for working in space. So my dear students, इसके अलावा NASA ना सिर्फ स्टडी करता है, रिसर्च करता है, इसके अलावा ये लोगों को टीच भी करते हैं ताकि उनको बेटर टीचर्स बना सकें, एस्ट्रोनॉट्स बना सकें, साइंटिस्ट बना सकें, टू एक्सप्लोर स्पेस मोर एंड मोर. International Space Station is set up in space for experiments. It is collaborative mission of NASA and other 5 agencies. So NASA के अलावा जो और 5 agencies हैं which are working on space discoveries, इन्होंने मिलकर एक स्पेस स्टेशन तामीर किया है स्पेस में, जहाँ पर तमाम जो एक्सपेरिमेंट्स हैं कंडक्ट किए जाते हैं और स्पेस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी किया जाता है इस स्पेस स्टेशन की मदद से. So this is moonwalk, the first man who stepped on the moon. Then this is a spacecraft. Okay, now is the time for evaluation. So quickly tell me what is the role of NASA in space exploration. Pause करें वीडियो को और quickly जो है इसको आंसर करें, जल्दी से बताएं कि नासा ने कौन कौन सी contributions की हैं. Very good. So they sent the first man on the moon, they sent the first man on the space, they have conducted many missions, they have a telescope named as Hubble telescope जिससे वो मुख्तलिफ images जो हैं वो space के हमें दिखाते हैं. And other than that they are teaching people to make them teachers, scientists and astronauts ताकि space को better जो है वो explore किया जाए. इसके अलावा इन्होंने एक space station बनाया है space में to conduct different scientific experiments in the space. Okay, my dear students, now is the time for practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video or you can get it at print from bio teacher. Write down your name and the roll number on the top and then start doing the worksheet. So, break down the word NASA. N stands for National, A stands for Aeronautics,
S for space, and then again A is for administration. For what purpose NASA is doing work? To explore space and to conduct different experiments in the space and to study more about Earth. When does NASA launch its shuttle program? Quickly write it down, take help from the book. What does NASA help teachers and students? How does NASA help teachers and students? You have to write it down. Then what are the achievements of NASA related to the study of planets? NASA की क्या achievements है planets को study करने में, and what is Hubble telescope image? Okay, my dear students, quickly pause the video and you can take help from the book to complete the worksheet. I hope everybody has finished it. Now let's quickly move forward towards the homework. For homework, you will make list and collect some pictures of NASA achievements and paste them on your notebooks. So आप moonwalk की picture जो है वो ले सकते हैं, उसको paste कर सकते हैं. You can take pictures of the telescope, satellites और उनको आप paste करें और फिर बताएं, list भी करें कि NASA की कौन-कौन सी achievements हैं. Okay? So today's wrap up. So in today's lecture, we have studied that NASA is an American government's agency that works in space for science and technology. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.